Hello students, today we are going to start exercise 2.2 and the first question is what? 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube and x belongs to domain or the range of minus 1 by 2 to 1 by 2. So firstly you should know if here sine inverse is there. One thing you should know, sine inverse into sine theta will give us theta, or sine into sine inverse theta will also be equal to theta for every function. Cos inverse into cos theta will be cos theta, only theta. Cos into cos inverse theta will be theta. So when the inverse is inverse multiply with its trigonometric function, give us the angle value only. So here if suppose here sine inverse is there, if in this bracket we can bring out sine function, then we can get the answer. So now let us see how to solve. So solution will be what? We are taking RHS firstly. RHS, that is what? Sine inverse 3x minus 4x क्यूब. चलो, सो जैसा आपको पता है कि हमको अंदर क्या चाहिए, साइन फंक्शन चाहिए, क्योंकि यहाँ साइन इन्वर्स ऑलरेडी है. अगर अंदर हमें ब्रैकेट के अंदर साइन फंक्शन मिल जाए तो हमारा इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा. x की प्लेस पे क्या करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे. तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. दिस विल बी व्हाट, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा. साइन 3 थीटा इज व्हाट, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. This is the formula for sine 3 theta, and here theta will be sine inverse x. So this, as earlier I said, if sine inverse function will multiply with sine, then we will get the angle value. So this will be only what, 3 theta. It means 3 and value of theta is what, sine inverse x, and this was our LHS. ये क्या था हम लोग का, LHS था. Okay, so this is the way to find out the, or to prove the LHS is equal to RHS. Now see the second question. It is similar to the first one, only in place of sine the question is asked for cos. So we are going to see the question number 3. Now the question number 3 question is what, tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 by 24 is equal to tan inverse 1 by 2. Tan inverse 1 by 2. I am writing the question. Tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 by 24 is equal to tan inverse 1 by 2. This is the question. So we know that all formula you have to learn. We know that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. Okay. This will be the formula. Therefore this can be this tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 by 24 can be written as tan inverse x plus y. It means 2 by 11 plus 7 by 24 upon 1 minus 2 by 11 into 7 by 24. So this can be simplified as tan inverse LCM. This will give us 24 2 is 48 plus 11 7 is 77 and 11 here
beta 1 minus this will be what 244. So 11 divide 244 will be 24, or this will be only simply multiply 14. Okay. Again here I am solving. So this will give us tan inverse in bracket, on adding these two 77 and 8 85 41 25 upon 244, and again we can take the LCM. LCM will be 244 again. This will be 264. Okay, if I am not wrong, 264. So 264 minus 14, still this will give us 264. 264 will cancel out. Tan inverse 125 upon 250, this will give us tan inverse 1 by 2, which was your RHS. Okay, last again you can see this was our LHS part. So here we can write LHS. Okay, LHS tan inverse 2 by 11, tan inverse 7 by 24, tan inverse as per the formula x plus y 2 by 11 plus 7 by 24 upon 1 minus x into y, 1 minus x into y. So on taking LCM, this will be 264. So 24 2s are 48 plus 11 7s are 77, and similarly here this will be 14 upon 264. On further solving simplification, we are getting RHS part, that will be tan inverse 1 by 2. Now the question number 5, we can see the question number 5. In question number 4, 2 tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 7 is equal to tan inverse 31 by 17. So in your book 2 tan inverse x formula is given, that is what 2 tan inverse x you have to apply for the formula, and formula should be in terms of tan. 2 tan inverse, 3 formulas are given. One is in the form of sine inverse, other one is in the cos, then the tan, but our rest of the terms are in the terms of tan. So we have to use 2 tan inverse is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. Then on solving, that question will become as like third one, means tan x plus tan y is equal to RHS part. Then you can apply the same formula and you can get the answer. Now we are solving question number 5. So question number 5. Tan inverse root over 1 plus x square minus 1 upon x, where x should not be equal to 0. Okay. So we have to find the value. तो हम लोग को यहाँ देखना है बेटा कि यहाँ tan इन्वर्स है, जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बोला कि अगर उसके इन्वर्स फंक्शन को उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, रिमूव नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा. तो कुल मिला के हमें यहाँ कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, हमें फंक्शन tan का चाहिए. तो हम क्या पुट करेंगे, तो देखते हैं कि क्या, अगर यहाँ मैं साइन पुट करता हूँ, सपोज साइन, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर का तो कोई फार्मूला ही नहीं होता है. कॉस करें तो भी नहीं होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर का फार्मूला होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. सो दिस विल बी व्हाट, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा minus, so this theta will be, in every question theta will be tan inverse x minus 1 upon this will be tan theta. This can be written as tan inverse 1 plus tan square sec square से sec minus बाहर आ जाएगा. This will be sec theta minus 1 upon tan, can this will be, let be tan theta for this step. On further solving, this will be tan inverse 1 upon cos theta minus 1 upon, this can be written as sin theta upon cos theta. Okay. Now on taking LCM, this will give us tan inverse in bracket 1 minus cos theta
upon cos theta and upon sin theta upon cos theta. So this cos will cancel out. So this will give us tan inverse 1 minus cos theta upon sin theta. Okay, we are getting tan inverse is equal to 1 minus cos theta upon sin theta, and with the half angle formula, this will be what? Tan inverse in bracket 1 minus cos theta is like 2 cos square theta by 2, 2 cos square theta by 2, and sin theta will be minus case sin square theta by 2. Okay, if listen carefully, 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2, but 1 plus cos theta, if plus is there then 2 cos square theta by 2. Okay, if minus is there we are using sin, if plus is there we are using cos, and sin theta it is just like sin 2 theta, 2 sin theta cos theta. If angle is, this angle is half, then this has to be half angle, so this will be 2 sin theta by 2 half angle cos theta by 2. So 1 sin theta by 2, 1 sin theta by will cancel out, this will cancel out, so this will be what? Tan inverse in bracket sin theta by 2 upon here 1 cos theta by 2, and sin theta upon cos theta will be tan theta. So tan inverse tan theta by 2, tan inverse into tan, उसी के इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा. दिस विल गिव अस थीटा बाई 2. इट कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू थीटा, which can be written as 1/2, and value of theta is what? Tan inverse x. This will be tan inverse x. So this will be answer. This will be the answer for question number 5. So again आपको क्या करना है, शुरुआत से आपको देखना है कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी. दूसरी चीज़, जो आपके क्वेश्चन में इन्वर्स फंक्शन दिया है उसी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जब तक उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वो एलिमिनेट नहीं होगा. एज पर क्वेश्चन हमने यहाँ tan थीटा पुट किया तो थीटा क्या हुआ, tan उधर गया तो tan इन्वर्स x हो गया. सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, क्योंकि सेक थीटा -1 का कोई फार्मूला होता नहीं है, उसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज किया, आगे सॉल्व किया. ये बहुत बहुत ज़रूरी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 12th. 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस cos theta, and similarly the half angle formula. Okay, so these are the very important formulas you need to learn. And now we can see some other question. So now I am taking question number 6, very next and the important one. All the trigonometric formulas you have to learn, all the values you have to learn. This trigonometric is totally based on the formula and it will help you during differentiation and integration. So try to learn the formula. Okay. Now see the next question, that is question number 6, which is what? Tan inverse. This is tan inverse 1 upon root over x square minus 1. Okay. Here mod x is greater than 1. Again you just see क्या पुट करें. अगर tan स्क्वायर x की जगह tan पुट करते हैं तो tan स्क्वायर -1 तो किसी का फार्मूला ही नहीं होता है, cos स्क्वायर -1 किसी का फार्मूला नहीं होता है, sec स्क्वायर -1 अगर करें, sec पुट करें तो 1 प्लस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर. तो sec स्क्वायर थीटा -1 क्या दे देगा, tan स्क्वायर. चलो ठीक है, tan स्क्वायर करेंगे तो 1/tan मिलेगा, और 1/tan तो ऊपर कॉट बन जाएगा. तो tan इन्वर्स इंटू कॉट, tan इन्वर्स इंटू कॉट कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम tan नहीं कर सकते हैं पुट. ठीक है, कुछ और देखते हैं. तो अगर हम, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है, अगर ये न्यूमरेटर पे होता तब तो tan पुट करते अच्छा रहता, क्योंकि वो tan ही रहता. अब रेसिप्रोकल पे है तो हमको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में अगर कॉट मिलेगा तब 1/cot जाके क्या बनेगा, tan बनेगा. और कॉट के साथ कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. सो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 विल बी लाइक कॉट स्क्वायर
थीटा. So put x is equal to, x की जगह क्या पुट करें, cosec theta. Put x is equal to cosec theta. So this will be tan inverse 1 upon root over cosec square theta minus 1. So this will be like tan inverse, or here again theta should be cosec inverse x. So cosec square माइनस थीटा, फिर से वही फार्मूला लिख दे रहा बेटा मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. इस फार्मूले से क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 विल बी कॉट स्क्वायर. सो दिस विल गिव अस 1 अपॉन रूट ओवर कॉट स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी tan inverse 1 upon cot theta. Okay, 1 by cot theta will be tan theta. This will be tan inverse into tan theta will be theta, and value of theta is what, cosec inverse x. On further, this can be written as pi by 2 minus sec inverse theta. Pi by 2 minus sec inverse. Why? Because cosec inverse x plus sec inverse x is equal to pi by 2. This formula is also given on your book. You can see. So this is also correct, and this can be written as also. This can be the answer also. Okay. So now the next question which I am taking. Should I take question number 7 or 8? I am taking question number. Firstly, let me take the question number 12. Let me solve the question number 12 fastly. Okay. The video is getting lengthy, so I will, for rest of the question I will make the separate videos. Do like and subscribe the channel. So question number 12, this is given cot in bracket tan inverse alpha plus cot inverse alpha. So this can, we know that tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. Therefore cot tan inverse alpha plus cot inverse alpha will be equal to cot in bracket, in place of tan inverse x plus cot inverse x will be pi by 2. So this will be cot pi by 2, and cot pi by 2 is nothing but 0. This will be your answer. This will be your answer. So I hope you understand, and for rest of the question of this exercise I'll make separate video. So kindly do like this video and subscribe the channel. Thank you.